Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today's our English language turn and today's our topic is revision work because as that you know your second periodic tests are going to start. Okay, so students included this topic revision work. Today we will read and solve exercise A, B, C and D of this revision work in our English language notebook in our today's class. Okay, so all students please pay partial attention to class and listen to my words clearly because today we are going to complete our revision work of our English language book constant. Okay, so all students firstly look at this exercise of this revision work. Students, so exercise A is fill in the blanks with correct words from the box. Fill in the blanks it means रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए with correct words it means सही शब्दों से from the box it means box से. Your exercise A is fill in the blanks with correct words from the box it means box से सही शब्द लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. Okay, then let's see it's your help box and in this help box your helping words are first number helping word is exercise it means व्यायाम. Second helping word is telephone. थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड आर कॉट दी थीव्स इट्स मीन कि चोरों को पकड़ा. कॉट इट्स मीन पकड़ा. कॉट इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ कैच. कैच मीन्स पकड़ना, कॉट मीन्स पकड़ा. ओके, थीव्स मीन चोरों. कॉट दी थीव्स इट मीन चोरों को पकड़ा. एंड नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ड इज बिहाइंड इट्स मीन पीछे. ओके, एंड लास्ट हेल्पिंग वर्ड इज दिस इट मीन ये. सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज इट मीन व्यायाम. टेलीफोन एंड नेक्स्ट कॉट दी थीव्स इट मीन चोरों को पकड़ा. बिहाइंड इट्स मीन पीछे. एंड लास्ट दिस इट्स मीन ये. ऑल दिस योर हेल्पिंग वर्ड्स. ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ड्स है. एंड इन दिस एक्सरसाइज है योर वर्क इज दैट आपका वर्क है कि स्टूडेंट्स क्या करना है इन हेल्पिंग वर्ड्स में से करेक्ट वर्ड को चूज करके इन सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स है ना उन पे राइट डाउन करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. सो स्टूडेंट्स लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज है students of E number sentences the police blank full stop. Okay, so students the correct group of word which we can be write down here in this first number blank to complete our E number sentence is caught the thieves. Okay, so students check out this group of word caught the thieves from the given help box and write down here caught the thieves in this first number blank to complete our E number sentence. Understand? When we have write down here caught the thieves, CAUGT caught the thieves, in this first number blank to complete our in our sentence, then students our sentence become the police caught the thieves. Okay, the police it's mean police. Caught means pakada. Caught it's the second form of catch. Catch means pakadna. Caught means pakada. The thieves it means choro. The police caught the thieves it's mean police ने चोरों को पकड़ा. Clear? So students write down here caught the thieves, CAUGT caught, THIEVES caught the thieves. Okay, students let's see B number sentence. Students, B number sentence is blank. It's an unbelievable story. Okay, so students, the correct word which we can be written here in this second number blank to complete our B number sentence is this. Okay, so students, take out this word this from the given help box and write down here this in this second number blank to complete our B number sentence. And students, when we have write down here this, THI is this. In this second number blank, then our sentence become this is an unbelievable story. Okay, this it's mean है, it means है, and means एक, unbelievable it's mean अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके. Okay, story means कहानी. This is an unbelievable story. It's mean ये एक अविश्वसनीय कहानी. Okay, ये एक ऐसी स्टोरी है जिस पे बिलीव ना किया जा सके, विश्वास ना किया जा सके. ओके, यह एक अविश्वसनीय कहानी है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स और बी नंबर सेंटेंस इट्स एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है. ओके, एंड हियर वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क इन द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स सी नंबर सेंटेंस. स्टूडेंट्स और सी नंबर सेंटेंस इज ब्लैंक इज गुड फॉर हेल्थ फुल स्टॉप. So student the correct word which we can be write down here in this in this third number blank to complete our C number sentence is exercise. Okay, so student take out this word exercise from this given help box and write down here exercise in this third number blank. And students when we have write down here in this third number blank exercise, then students our C number sentence become exercise is good for health. Okay, exercise it's mean व्यायाम, it means है, good means अच्छा, for means के लिए, health means स्वास्थ्य. Exercise is good for health it's mean कि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. Clear? So students let's see D number sentence. Students, our D number sentence is the word that makes sense is blank full stop. So student, the correct word which we can be write down here in this 4 number blank to complete our D number sentence is telephone. So student, take out this word telephone from the given help box and write down here telephone in this 4 number blank to complete our D number sentence. And TELEPHONE telephone. Okay, and then when we have write down here telephone in this 4 number blank, then our D number sentence become the word that makes sense is telephone. Okay, the word it's means शब्द that means जो make it mean बनाता है, sense means अर्थ, it means है टेलीफोन. ओके, the word that makes sense is telephone it's mean कि शब्द जो अर्थ बनाता है टेलीफोन है. क्लियर? So students let's see E number sentence which is last sentence of this exercise. So look clearly students, so E number sentence is Maria and the children hid blank the trees. Okay, so students the correct word which we can be write down here in this fifth number blank to complete our E number sentence is hid, behind. Okay, so student take out this word behind from the given help box and write down here behind in this fifth number blank to complete our E number sentence. Understand? When we have write down here behind, BEHIND behind in this fifth number blank, then our E number sentence become Maria and the children hid behind the trees. Okay, Maria and the children it's mean Maria और बच्चे. Hid means होता है छिप गए. Okay, hid it's the second form of hide. Hide means छिपना, hid means छिप गए. Clear? Behind means पीछे, the trees means पेड़ों.
मारिया एंड द चिल्ड्रेन हिड बिहाइंड द ट्रीज, इट्स मीन कि मारिया और बच्चे पेड़ों के पीछे छिप गए. क्लियर सिस्टम, वी हैव रीड एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज है, एंड इन दिस एक्सरसाइज है योर करेक्ट वर्ड्स आर, फर्स्ट नंबर करेक्ट वर्ड is got the thief, second is this, it's been yay, okay, and third is exercise, it's been vyam, fourth is telephone, and last fifth number help. Correct word is behind, it's been behind, it's been piche. Clear? So student, we have read and solved this exercise of this revision work, and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any sentence of this exercise. So student, let's exercise B. Your exercise B is change these positive sentences into their negative forms. Okay, change means बदलिए या परिवर्तित करिए. These means in positive sentences, it means सकारात्मक वाक्यों. Into means made. There means उनके negative forms, it means नकारात्मक रूपों. Students, your exercise B is change these positive sentences into their negative forms. It's mean कि सकारात्मक वाक्यों को, इन सकारात्मक वाक्यों को उनके नकारात्मक रूपों में बदलिए. ओके, इन सकारात्मक वाक्यों को उनके नकारात्मक रूपों में बदलिए. सो स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज भी अवर वर्क इज दैट, हमारा वर्क है that we can see that here are two sentences. Okay, तो this exercise भी give us a two sentences. Okay, ये exercise भी हमें two sentences दे रही है, and both sentences are positive sentences. दोनों sentences हमारे सकारात्मक वाक्य, and our work is that to change the given positive sentences into negative form. हमें क्या करना है, इन positive sentences को इनकी नकारात्मक रूपों में बदलना है. Okay, and since we have read that we can change a sentence positive to negative. Okay, positive to negative by add not after the given helping words. Okay, so students, let's see first number sentence of this exercise B. Students, of first number sentence is Miss Sunanda is our teacher, full stop. Okay, Miss Sunanda, it's mean कि श्रीमती सुनंदा, इज मीन्स है अब मिस सुनंदा. ओके, इट्स मीन कि कुमारी सुनंदा, इज मीन्स है अवर मीन्स हमारी टीचर, मिस अध्यापिका. ओके, मिस सुनंदा इज अवर टीचर, इट्स मीन कि मिस सुनंदा हमारी अध्यापिका है. सो स्टूडेंट्स, ऑफ फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज बी, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस इज ओके, सकारात्मक वाक्य. एंड सर वी कैन चेंज दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस, मिस सुनंदा इज अवर टीचर, मिस सुनंदा हमारी अध्यापक है, by add not after given helping word each. Okay, so students, add not after the given helping verb each. Okay, so students, when we add when we have added not after given helping verb, okay, after given present continuous tense helping verb in singular form each, okay, then our negative form of this given first number sentence become Miss Sunanda is not our teacher. Okay, Miss Sunanda, it's mean Miss Sunanda. Okay, इट मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, अवर टीचर, इट्स मीन हमारी अध्यापिका या शिक्षिका. ओके, मिस सुनंदा इज़ नॉट अवर टीचर, इट्स मीन कि मिस सुनंदा हमारी अध्यापिका नहीं है. ओके, और वी कैन से आल्सो दैट मिस सुनंदा हमारी शिक्षिका नहीं है. ओके, टीचर मीन्स अध्यापिका या शिक्षिका. क्लियर? सो स्टूडेंट, वी हैव चेंज्ड द गिवन फर्स्ट नंबर सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म. ओके, बाय ऐड नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इज. ओके, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी इज थी ना, इसके बाद में हमने नॉट को ऐड कर दिया और पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर दिया. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस विच इज लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज बी. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी. Students, our second number sentence is I am happy, I miss मैं, am means who, am it's a present continuous tense helping verb. Okay, happy means खुश या प्रसन्न. I am happy, it's in मैं खुश हूँ या मैं प्रसन्न हूँ. Okay, so students, we can change this second number sentence into it's a negative form by add not after given helping verb am. Okay, so students, add not after given helping verb am. Okay, and then when we have added not after the given helping verb am, then our negative form of the given second number positive sentence is I am not happy. Okay, I means मैं, am means who, not means नहीं, happy means खुश या प्रसन्न. I am not happy, it's mean मैं खुश नहीं हूँ या मैं प्रसन्न नहीं हूँ. Clear? So students, let's see numbers exercise, because we have completed exercise B, and I hope you must have understood this exercise B and you have no problem change positive sentences into negative form. Okay, so students, let's see exercise C. Students, so exercise C is write whether these sentences are declarative D, interrogative I am in, imperative I am im, or exclamative E. Okay, it's mean कि write means लिखिए वेदर दी सेंटेंसेस. ओके, कि अगर ये सेंटेंसेस, ये वाक्य डिक्लेरेटिव है, इट्स मीन कथात्मक है तो डी मार्क करिए. इंट्रोगेटिव है, इट्स मीन प्रश्नवाचक है तो आई इन मार्क करिए. एंड अगर इम्परेटिव है, इट्स मीन आदेशात्मक है. ओके, कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं. ओके, सजेस्ट कर रहे हैं. ओके, एडवाइस दे रहे हैं. अगर इम्परेटिव है, आदेशात्मक है तो आई एम इम मार्क करिए. और एक एक्सक्लेमेटिव है ना, अगर विस्मयादिबोधक है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है तो ई मार्क करिए. क्लियर? तो स्टूडेंट, इन दिस एक्सरसाइज अवर वर्क इज दैट, हमारा वर्क है कि हमें क्या करना है कि इन सेंटेंसेस को रीड करना है और ये फाइंड आउट करना है कि अगर ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव है तो हम
डी मार्क करेंगे. डिक्लेटिव इट्स मीन कथात्मक है, एक स्टेटमेंट, एक कथन है तो हम डी मार्क करेंगे. इंट्रोगेटिव इट्स मीन कि प्रश्नवाचक एक क्वेश्चन कर रहा है ना, तो हम इन मार्क करेंगे इंट्रोगेटिव को शो करने के लिए. एंड सिंस अगर अवर सेंटेंस इज इम्परेटिव, अगर हमारा सेंटेंस इम्परेटिव है, आदेशात्मक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, ओके, तो हम क्या करेंगे, इन मार्क करेंगे. एंड अगर स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव है ना, एक्सक्लेमेटरी है, इट्स मीन विस्मयादिबोधक है, ओके, तो हम ई मार्क करेंगे. स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहे हैं तो हम ई मार्क करेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, let's see a number sentence of this exercise. See students, so a number sentence is keep quiet. Okay, keep quiet it means शांत रहिए. Okay students, we can see the first a number sentence keep quiet, it's an imperative sentence because it's a gives us a command. एक command दे रहा है ना, आदेश दे रहा है ना कि keep quiet, शांत रहिए. Okay so students, your a number sentence it's an imperative sentence. Okay so students, mark I am im for so imperative sentence. Okay imperative mark करिए. Okay तो इम्परेटिव शो करने के लिए हम आई एम मार्क करेंगे. ओके सो स्टूडेंट्स, योर ए नंबर सेंटेंस इट्स एन इम्परेटिव सेंटेंस. ओके इम्परेटिव सेंटेंस है आदेशात्मक वाक्य बिकॉज इट्स सो कमांड को शो करें. क्लियर? स्टूडेंट्स लेट्स सी बी नंबर सेंटेंस. स्टूडेंट्स बी नंबर सेंटेंस इज हाउ मेनी ब्रदर सो डू यू हैव, इट्स मीन कि आपके कितने भाई है. स्टूडेंट्स योर बी नंबर सेंटेंस इट आज का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर रहा है. ओके इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है. ओके सो स्टूडेंट्स, योर बी नंबर सेंटेंस इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स मार्क आई इन for showing interrogative sentences. Okay and students, your B number sentence it's an interrogative sentence, एक प्रश्नवाचक वाक्य. क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है. स्टूडेंट लेट्स सी सी नंबर सेंटेंस which is last sentence of this exercise. So look clearly students, your C number sentence is जूही lives in a big city. जूही okay lives it mean रहती है, in means में, a means एक, big means बड़ी, okay city means शहर. जूही lives in a big city it's mean कि जूही एक बड़े शहर में रहती है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स इट्स अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. ओके students mark D for showing declarative sentence. Okay because students your C number sentence it's a statement, एक statement एक कथन है. अब एक statement एक कथन है तो declarative sentence होगा ना, तो students mark D for showing this C number sentence as a declarative sentence. Okay it's your declarative sentence, ये आपका declarative sentence है, कथात्मक वाक्य. Clear? So student, we have read and solved this exercise and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any sentence of this exercise. Okay so student, let's see D number exercise which is the last exercise of this revision work. So look clearly students, your D number exercises make new words by combining the given words with these suffixes. Okay make new words it mean नए शब्द बनाइए, by combining it mean combine करके. Okay जोड़कर the given words it mean दिए हुए शब्दों को with the suffixes it mean suffixों के साथ. Okay your exercise D is make new words by combining the given words with the suffixes it's mean कि कम्बाइनिंग करके. ओके कंबाइनिंग करके मतलब जोड़कर. ओके दिए हुए शब्दों में सफिक्स को जोड़कर. ओके सफिक्सेस इट्स मीन होता है कि उपसर्गों. ओके दिए हुए शब्दों में उपसर्गों को जोड़कर नए शब्द बनाइए. ओके सो स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज डी अवर वर्क इज दैट, हमारा वाक्य कि हमें कुछ वर्ड्स दिए ना, इन वर्ड्स में हमें दिए हुए सफिक्सेस को, दिए हुए उपसर्गों को जोड़कर हमें न्यू वर्ड्स मेक करने के लिए. असिस्टेंट लेट्स सी ए नंबर. Students, so A number is possible plus ly. Okay, possible it's a word. Okay, possible it means some. And since ly it's a suffix. एक suffix है, उपसर्ग है. Okay, so students, when we have combined ly with a given word possible, then our new word with a perfect suffix become possibly it means संभवतः. Okay so student, write down here possibly in this first number blank, possibly possibly it means संभवतः. Okay student, let's see second number B. Okay student, so B number is beauty plus fy. Okay so student, beauty it means सुंदर and it's a word, एक word है. and student your given suffix is fy. Okay so student, when we have combined fy suffix with the given words beauty, then our new word with a correct suffix become beautify. Okay beautify, beautify it means सुंदरता. Okay so students, write down here beautify in this second number blank, beautify. Okay students, let's see C number which is last word of this exercise D. Okay so look clearly students, our C number word is wise plus dumb. Okay wise it's a word, it means बुद्धिमान. Okay and dumb. Okay dumb it's a suffix, एक suffix है. Okay and it's a suffix it means एक उपसर्ग. Okay so students, when we have combined the given suffix dumb with the given word wise, then our new word with the correct suffix becomes wisdom. Okay wisdom it's in buddhimata, wisdom. Clear? So students, we have read and solved this exercise D, and in this exercise D your correct words with the perfect suffixes are, first is possibly it means संभवता, second is beautify okay it means सुंदरता, and last third is wisdom it means buddhimata. Clear? So students, we have read and solved this exercise D, and I hope you must have understood this exercise D. You have must understood that how can you add
suffixes with given words and make new words. Clear? So students, we have read and solved this exercise D. And finally we have solved all the given exercise. We have solved exercise A, B, C and D of this revision work in our FAR English language notebook. And I hope you must have understood all these exercise A, B, C and D of this revision work. You have no problem in any exercise of this revision work. Okay, so students, today's your classwork is that complete exercise A, B, C and D of this revision work in your FAR English language notebook with your best handwriting. It's a today's classwork. And students, your homework is that learn exercise A, B, C and D of this revision work from your FAR English language notebook. And I hope you have no problem for learning well, because students, I've explained all exercise A, B, C and D of this revision work. Okay, so all students, firstly complete your classwork. Complete exercise A, B, C and D of this revision work in your FAR English language notebook with your best handwriting and send me your work here. Thank you.